Hey guys, welcome back to another YouTube video. In this video, I am going to do trade breakdown on GBPCAD and USDJPY basically, okay? And in this video, I'm going to discuss few things. First of all, we will discuss about internal to external, okay? That's what I trade, understanding internal level and external. If you don't know what is internal range liquidity, external range liquidity, I have already uploaded one video on YouTube, so you can go and check basically. So in this, we're going to focus four main thing. Okay, we're going to understand higher time frame order flow. We will understand our bias. Okay, on higher time frame like daily, weekly time frame. And once we will understand higher time frame order flow, we will understand lower time frame entry model. Okay, where we can basically take trade, where we can take entry basically. And third, we will understand how to add more position. Okay, as a trader we have to learn this thing, okay, and this is very important. If you read Best Loser Win book, I don't remember the author name. If I'm not wrong, his name is Tom basically, okay. So he also discuss, if you know कि we have range, okay, let's say from point A to point B we have range, and you know market is going to move from point A to point B, okay, then why not to add position basically, okay, if market is moving in your favor, learn to add position so you can capitalize more profit, right? So ये हम लोग को सीखना काफी important है basically, okay. And also क्योंकि एक ट्रेड हम लोग USD JPY में ट्रेड ब्रेकडाउन करने वाले हैं, तो इसलिए हाउ टू यूज DXY एज अ कॉन्फ्रेंस बेसिकली, ओके, यूएस डॉलर को कैसे एज एक का कंफर्मेशन और ले, ठीक है, ताकि अपना सेटअप A++ बने, ठीक है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ओके. So if you guys remember this week, week 3 of December, okay, I have uploaded one weekly forecast for you guys, okay, in complete detail. I have discussed there everything, what जितने भी मैं पेयर ट्रेड करता हूँ सब मैं वहाँ पे डिस्कस किया हूँ. DXY, Euro USD, GP USD, Euro CAD, GP CAD, everything I have discussed here, okay. So I'll recommend you कि ये ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो देखने से पहले आप ये वीकली फोरकास्ट देख के आओ, ठीक है. सो अगर आप लोग वीकली फोरकास्ट देख के आ रहे हो वीडियो, ठीक है, सो इन दैट वीडियो आई डिस्कस आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग एट दिस डेली फेयर वैल्यू गैप, ओके. सो basically when market tapped the daily fair value gap, I was looking for long, and you can see how market printed very beautifully upside, okay. And you can see we have relative equal high buy side liquidity, okay. So this is daily fair value gap is our internal range liquidity. We have this external range liquidity, and external के ऊपर भी हम लोग का एक nice buy side liquidity है. We will see entry on the lower time frame here, so don't worry, but I want to give you guys first understanding of daily time frame, okay. So now we are on trading view basically. You guys have already seen basically the market respected its daily internal and grab this buy side liquidity and this external, okay. But when market was here, okay, basically last week when market closed here at this daily fair value gap, you can see how order flow is bullish basically, right? You can see from this low to this high, we printing just bullish candle, okay. एंड कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर फ्लो बुलिश शिफ्ट हो गया? यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मार्केट बुलिश होता है तो जितने भी बेरिश लेवल होते हैं वो फेल होते हैं बेसिकली, ओके. सो इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, यहाँ पे एक बेरिश फेल गया था, मार्केट fail to reject from this bearish value gap and then market continue trade higher. So we know जैसा ही ये लेवल ब्रेक हुआ, सो मार्केट शिफ्टेड बुलिश बेसिकली, ओके. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है, जहाँ से प्राइस बेसिकली रिजेक्ट करेगा. सो यू कैन एक्सपेक्ट प्राइस बेसिकली गोइंग टू मूव हायर बेसिकली. अब देखो एक बेरिश वैल्यू गैप यहाँ पे था, ठीक है, जब ये बेरिश वाली गैप इन्वर्टेड बना, जब ये कैंडल या फिर ये कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुआ अपसाइड, सो वी नो कि दिस बेरिश वैल्यू गैप इज नॉट रिस्पेक्टिंग, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है, अब देखो फेयर वैल्यू गैप भी कुछ नहीं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है. बुलिश फेयर वैल्यू गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट और बेरिश फेयर वैल्यू गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बेसिकली, ओके. सो ये बेरिश वैल्यू गैप यहाँ पे क्या काम करता, रेजिस्टेंस का काम करता, बट मार्केट फेल टू ट्रेड लोअर, एंड ये जो रेजिस्टेंस था बेरिश वैल्यू गैप था, मार्केट इसको कंटिन्यू ब्रेक किया. नाउ दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला था वो सपोर्ट का काम करेगा. सो वी कैन सी जो बेरिश लेवल थे मार्केट इज नॉट रिस्पेक्टिंग, ओके. सो मार्केट इज failing to hold basically bearish level and creating new bullish level, and you can see we created new bullish value gap. So now you can see in left here we don't have anything जहाँ से market basically reject करे.
price lower, and we have created bullish fair value gap. And you can see we have very nice liquidity here. So internal to external you can look for. So now I know order flow is bullish. This is high priority trade basically, okay? And internal to external you can look for trade basically, right? So I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. So let's go to lower time frame. We're going to use time frame alignment, okay? So we're going to use daily to 4 hour or 1 hour, okay? So let's come to 1 hour time frame. So on 1 hour time frame, you can see basically we are at this daily bullish fair value gap, and you can see we have this very nice low resistance liquidity, trend line liquidity. Basically, you can see we have very nice liquidity build up. Okay, so our bias is what? Our bias is basically bullish, right? We're looking for price to move higher from this daily fair value gap. You can see we have very nice trend line liquidity build up. Okay, so this looks really high priority. Why? Again, order flow is bullish on higher time frame. Okay, very nice liquidity build up. Okay, to target basically to sweep this liquidity. Okay, जितने भी लोग ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जितने भी लोग ये ट्रेंड लाइन पे सेल ले रहे होंगे सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर होगा, राइट? सो दिस लुक्स वेरी हाई प्रायोरिटी, राइट? इफ यू डोंट नो अबाउट लिक्विडिटी, उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में. जस्ट गो एंड चेक आउट on my channel basically, or you can go and check out any on channel, you will see. Okay, so now I have to wait for entry. अब देखो दो चीज यहाँ पे आप कर सकते हो बेसिकली. जैसे ही मार्केट, इफ यू आर वेरी स्विंग ट्रेडर जो डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना चाहते हो, यू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, यू अंडरस्टैंड वेरी क्लीन लिक्विडिटी इज resting, you can take trade directly at daily fair value gap. Okay, so let's say you entered at this daily fair value gap. Okay, putting stop loss below the first candle low. ये सब ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडिंग वीडियो में डाला हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे रखना है. सो यू कैन गो एंड चेक आउट. फर्स्ट कैंडल लो के नीचे रखेंगे, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कैंडल बेसिकली, ठीक है? सो इसके नीचे अपना जाएगा स्टॉप लॉस, एंड लेट्स यू टारगेटिंग दिस बाय साइड लिक्विडिटी. Okay, it will give you 1 to 1.9 hour, let's say, for example. Okay, so this can be your entry on daily time frame. Okay, but let's say you want to wait for lower time frame, okay, to catch maybe good risk reward. Okay, so but you can enter in this area also if you understand the daily order flow. Okay, let's come to 1 hour time frame. Okay, let me delete this one quickly. So now, right now we don't have any displacement higher, right? We don't have any displacement higher to look for entry. So this is basically front side move towards our key level daily fair value gap. So we have to wait for the back side move. Again, I've already covered everything about front side, back side move. Make sure you go and watch last few videos on my YouTube channel, or better, it is going to be much better if you go and check out my Udemy course. I have covered everything there. Okay, अगर आप यूडेमी में कोर्स परचेज नहीं भी करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट गो एंड वॉच few of my YouTube videos. Okay, 5 6 videos I have basically. Just go and watch. Okay, so you can see we have this front side move toward this daily fair value gap. Okay, now we have to wait for the back side move ताकि हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये daily fair value gap होल्ड कर रहा है and it displacing higher from this daily fair value gap. Okay, so we can add our position. So let's see, let's wait. So here our new week open basically. So we waiting, and here you can see we have this first displacement higher, right? So we have this first displacement higher from this daily fair value gap. Now here you can see so many things basically. Okay, you can see we have this H1 fair value gap. You can see we have this H1 fair value gap, and let's mark this blue. Personally, I like to trade on the fair value gap. Okay, and we have this H1 fair value gap here as well basically. Now many people will ask me कि कहाँ पे entry ले, and how I should know कि market is going to hold this fair value gap, or market is going to trade all the way down to this fair value gap, or all the way down to this fair value gap. We never know. Okay, trading is again a probability game. You have to understand with your experience and with your back testing कि आप कहाँ पे ट्रेड लोगे. बेसिकली आई लाइक टू ट्रेड जहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा हो मेरे को. ओके, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं.
एंड मैं काफ़ी वीडियो में डिस्कस भी किया हूँ कि अगर इफ़ यू सीइंग सो मेनी फेयर वैल्यू गैप, ओके, अपना बायस तो बुलिश था, राइट, एंड यू कैन सी ऑन H1 वी हैव थ्री फेयर वैल्यू गैप बेसिकली, राइट, लेट्स type here as well, H1 fair value gap, so we have three fair value gap, so now you are in confusion कि किसमें मैं long लूँ, so you have to just go one time frame higher, okay, मे बी 4 आवर टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, सो लेट्स गो टू H4 टाइम फ्रेम क्विकली, लेट्स डू वन थिंग, ये H1 फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ये कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लीन दिखे. So if you go to 4 hour time frame, you will see we have created this 4 hour breakaway gap. What is breakaway gap? Basically, it's a fair value gap. You can see we have this fair value gap. इसमें बस ये है कि थर्ड कैंडल इज क्लोजिंग अबव द सेकंड कैंडल हाई, ओके, सो वी नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस विल कम ऑल द वे डाउन टू दिस एरिया, ओके, ऑफ कोर्स इट कैन कम डाउन एंड देन मे बी इट विल ट्रेड हायर, जो वो भी डिस्कस करेंगे, वी डोंट वरी, but you can see on 4 hour we have created this breakaway gap again. This also has covered on some of my swing trading videos, so just go and check out, ठीक है. सो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको, कैन यू सी, जो डे टाइम फ्रेम हम लोग अभी ऑर्डर फ्लो में डिस्कस कर रहे थे वही चीज 4 आवर टाइम फ्रेम में ही है. 4 आवर टाइम फ्रेम में भी यू कैन सी वी हैव दिस बेयर्स वाली गैप, राइट, जो कि इन्वर्टेड हो गया, बेयर्स लेवल इज नॉट होल्डिंग बेसिकली, सो वी नो कि H4 ऑल्सो टर्न बुलिश, so I know this is breakaway gap, so maybe price will not come all the way down to this breakaway gap, okay, so let's go again to 1 hour time frame quickly. So I have to look for a confirmation, ठीक है, now you can do two thing basically, okay, so ये जो H1 fair value gap है, you can see we have this mitigation block, right, so we have this mitigation block as a confirmation, okay, this area looks strong basically, right, so now you can place your long position here, ठीक है. नाउ स्टॉप लॉस, अगेन जो भी हम लोग डे टाइम फ्रेम में डिस्कस कर रहे थे, डे टाइम फ्रेम में एंट्री में कि फर्स्ट कैंडल के नीचे आप रख सकते हो, तो यहाँ पे ये H1 फेयर वैल्यू का अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इसका ये है, राइट, सो आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे एक रख सकते हो एंड देन यू कैन टारगेट 1:2 1:3 totally on you, or you want to target final external liquidity, totally on you, so this can be your first stop loss basically. But let's say you want to play safe, because you know we have this H4 fair value gap as well here, right, 4 hour का fair value gap एक अपना नीचे भी है, so now you can put your stop loss below this fair value gap, okay, if you want to play safe. हो सकता है कि market all the way down आए, okay, to tap this fair value gap and then continue basically higher, so if you want to play safe you can put your stop loss, it will give you little less risk reward, but you can, you know, this is the our final target buy side liquidity जो equal high था अपना, so if you're going to target this one, it will give you 1:2 risk reward, okay, so it's totally on you how you want to trade, so that can be your entry basically, okay. And many people will ask me ki which entry model is this basically. This is for me, it's a silver bullet, because you can see we have swept this swing low, right? Swing low swept. Okay, we have this high resistance liquidity basically, right? We have this high resistance liquidity. Okay, and then market start displacing higher, and we have this market structure shift basically as well. Okay, so whatever entry model you want to say, okay, all you have to understand, okay, this is my daily fair value gap, this is my external range liquidity, okay, this is my internal, this is my external. We have this enough range from this low to this, sorry, from this low to this high, we have this enough range. So I just have to understand कि कहाँ पे मेरा एक अच्छा entry model रहेगा, okay. Personally, I entered here. I'll show you guys my position as well, so don't worry. So the first entry I entered at this fair value gap, putting my stop loss below this first candle low, okay, because I was expecting the market will not come uh, at this breakaway gap. Of course, it can come, but I want in this trade क्योंकि काफी अच्छा liquidity buildup था, equal high था, trend line liquidity था, so I just wanted to be make a little good risk reward trade basically, okay. If I'm not wrong, I was targeting this 800 something. Okay, I'll show you. So this was my first entry. So इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं. You can see यहाँ पे आपका entry execute हो गया होगा. When I saw displacement higher, okay,
and I saw another H1 bullish for oil gap created. Okay, you can see we have this another H1 bullish for oil gap here. So I added position here as well. Okay, at this H1 fair value gap, stop loss below this swing low. Okay, and same thing. I guess I was targeting. It was 8 100 if I'm not wrong. I have to check basically something. I'll show you my execution, so don't worry. So here I added more position, and जो ये फर्स्ट एंट्री था मेरा यहाँ पे, ओके, इसका मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था क्योंकि मार्केट इज प्लेसिंग हायर विथ फेयर वैल्यू गैप, एंड यू कैन सी दैट्स हाउ यू शुड ऐड पोजिशन. अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, ओके, एंड यू नो कि योर फाइनल टारगेट इज दिस वन, ओके, यू कैन सी वेरी क्लीन लिक्विडिटी, सो व्हाई नॉट टू ऐड पोजिशन. अब ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऐड कर लोगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ डिस्प्लेस हो रहा था मार्केट, सो इट्स शोइंग सिग्नेचर कि मार्केट रिस्पेक्टिंग बुलिश लेवल, राइट. जैसे अभी हम ऑर्डर फ्लो डेली में डिस्कस किए, 4 आवर में डिस्कस किए, वैसे ही यहाँ पे आप H1 में देख सकते हो कि यहाँ पे जो H1 बेरिश वाली गैप था, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, बट यहाँ पे जब मार्केट वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड दिया तो जो बेरिश वाली गैप था, इट्स नॉट होल्डिंग. जो भी बेरिश लेवल यहाँ पे भी है, यू कैन सी इट बिकम्स इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप. ओके, सो बेरिश लेवल इज नॉट होल्डिंग, बुलिश लेवल इज क्रिएटिंग, सो वी नो कि H1 में भी ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग बुलिश. ओके, so that's how you can add position. And here it hit my TP in this candle basically. Okay, and here you can see my execution as well. Okay, as I said, first trade was here around 8025 somewhere. Okay, and 8051, and I booked my take profit at this 8100 level basically. Okay, so that's how you can add position, and you can see market basically traded higher to grab this buy side liquidity as well. Okay, so that's how you add position, that's how you understand higher time frame, and that's how you understand order flow. So I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. Okay, so now let's see another example जो मैं Discord में share किया था. If you are not in my Discord, make sure you go and join. It's absolutely free. Link मैं नीचे डाल दूंगा. So this is what I shared with you guys on 17 December basically on USDJPY. इसमें भी हम लोग पूरा top down analysis करेंगे. Okay, so I was looking for market to move from this daily bullish rally gap from this internal to external. Okay, we'll understand in this also order flow. So don't worry, and you can see how it moved basically. Okay, so let's come to trading view. Okay, so let's do a complete trade breakdown on USD JPY. So here you can see we starting with the weekly time frame. Okay, you can see basically अभी जो इस week 3 का कैंडल मैं अभी प्रिंट नहीं किया हूँ. ओके, सो मैं पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ. ओके, सो बेसिकली यू कैन सी वी हैड दिस वीकली बेरिश वाली गैप. ओके, जो कि ये कैंडल जब क्लोज हुआ तो ये वीकली बेरिश वाली गैप becomes inverted fair value gap, right? सो वी नो वीकली ऑर्डर फ्लो इज बुलिश. ओके, सो अगर ये वीकली लेवल होल्ड नहीं कर रहा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी, दिस स्विंग हाई. ओके, दिस लिक्विडिटी, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूएशन मूव टू द अपसाइड बेसिकली टू टारगेट दिस बाय साइड लिक्विडिटी. ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम हम लोग को बुलिश दिख रहा है, रिमेंबर. ओके, सो नाउ वी विल गो टू डेली टाइम फ्रेम एंड वी विल वेट फॉर बेसिकली नाइस फ्रेमवर्क टू फिट, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ मार्केट एक बड़ा रेंज है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, राइट. सो यू हैव टू वेट फॉर डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, एज अ basically I'll say it should be basically in alignment, right? So let's come to daily time frame. So if you see daily time frame, this is what I said with you when this daily bullish value gap formed. Okay, so remember this was the weekly inverted fair value gap, so I'm removing this one. So even if you see daily time frame, you can see a very clean and cut order flow is bullish. जैसे अभी हम डिस्कस किए, ये bearish value gap, you can see it becomes inverted fair value gap, bearish value gap becomes inverted fair value gap. So you know कि जो resistance यहाँ पे जो sellers हैं वो यहाँ पे नहीं है, and buyers are taking control. How you know buyers are taking control? First, जितने भी bearish level थे, it's getting disrespected, right? And bullish level is forming. So you know order flow is bullish. जो भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए जीपी कैड में, एंड यही चीज़ हम लोग हर एक ट्रेड में डिस्कस करते हैं. इफ़ यू गो एंड वॉच एनी वीडियो, जितने भी मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन किया है अभी तक, और जितने भी मैंने भी ऑर्डर फ्लो पे वीडियो डाला है, सब में सेम चीज़ है. ओके, सो यू नो ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, सो यू नो दिस इज हाई प्रायोरिटी बेसिकली. ओके, एंड यू लुकिंग फॉर व्हाट, इंटरनल टू एक्सटर्नल. जैसे हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, वी कैन यूज DXY एज अ कन्फ्लुएंस एज वेल. क्यों? क्योंकि ये US डॉलर है, राइट.
सो लेट्स चेक यूएस डॉलर एज वेल कि यूएस डॉलर बुलिश लग रहा था कि बेरिश लग रहा था। सो इफ़ यू सी DXY, ये भी मैंने अपने वीकली फोरकास्ट जो मैंने डाला था उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि मेरा बायस क्या है DXY में। सो यू कैन सी वी वाज एट दिस वीकली इंटरनल एंड दिस वाज द वीक 3 कैंडल बेसिकली। सो यू कैन सी हाउ इट एक्सपेंडेड हाई, ओके। उसमें मैंने डिस्कस किया था, अगर आप जाके एक बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीकली फोरकास्ट और वीडियो देख कर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है। सो आई डिस्कस देयर वी हैव फॉर्म दिस स्विंग लो पैटर्न, ओके। सो वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो बुलिश क्रिएट होगा एंड वी आर ऑलरेडी इन द फ्रेमवर्क ऑफ वीकली इंटरनल टू एक्सटर्नल बेसिकली, राइट। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर ऑन द वीकली फोरकास्ट आल्सो आई डिस्कस कि अगर मार्केट ये स्विंग लो ग्रैब करता है एंड डिस्प्लेस करता है हायर, सो वी कैन लुक फॉर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड फॉर दिस वीकली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। क्योंकि वीकली तो हम लोग ऑलरेडी बुलिश है, सो वीकली से हम लोग 4 आवर अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं। अब क्यों मैं DXY देख रहा हूँ, क्या DXY देखना इम्पोर्टेंट है? इट्स नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू कैन वॉच एंड आप मतलब अ, समझ सकते हो, आपको ज़्यादा हेवी नहीं लग रहा है, तो यू कैन लुक फॉर DXY अगर आप USD पेयर ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर USD आपको, फॉर एग्जांपल ये यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर अगर आपको बुलिश लग रहा है, यूएस डॉलर का बायस बुलिश लग रहा है, सो USD JPY भी चांसेस है कि बुलिश मूव करे। अगर यूएसडी जेपीवाई भी टेक्निकली आपको बुलिश दिख रहा है एंड DXY भी टेक्निकली बुलिश दिख रहा है, सो इट इज़ वेरी गुड बेसिकली, राइट। सो आई डिस्कस एंड इवन आई शेयर्ड विद द group as well in the community. I was expecting this, okay. So you can see we tap this pura, I guess one day we was holding this fair value gap and this is what we created basically, ठीक है, काइंड ऑफ इक्वल हाई, ओके। अब हम लोग वापस यूएसडी जेपीआई में आते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा, यूएस डॉलर का बायस ही बुलिश था, मैं दिखाऊंगा यूएस डॉलर में हुआ क्या है, डोंट वरी। सो यूएसडी जेपीआई वाज आल्सो लुकिंग बुलिश, यूएस डॉलर वाज आल्सो लुकिंग बुलिश, सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर मी, ओके। नाउ लेट्स गो फ्रॉम डेली टू 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ओके। सो नाउ वी आर इन 1 आवर टाइम फ्रेम। So this is our external liquidity and this was basically more higher. We have this weekly swing high जो हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, राइट। सो नाउ सी we tap this daily fair value gap, we displacing higher with fair value gap as well, okay. This can be your entry, okay. I'll not say this cannot be your entry, this can be your entry, okay, if you want to take trade. And if you see, this looks like a market maker sell model, very nice consolidation, right. So kind of market makers, sorry, market maker buy model, okay. So we're looking for just internal to external basically, okay. So this can be your entry. मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था पर्सनली, आई हैव मिस्ड, ओके, क्योंकि एकदम ये मिड नाइट को, नॉट मिड नाइट, अराउंड 3 AM 2 AM इंडियन टाइम में मतलब फॉर्म हुआ था, उस टाइम मैं सो रहा था आराम से, ठीक। सो market was displacing higher when I saw market was something like this, okay. So you can see we grabbing this swing low, right, still internal to external we're looking for, right. So now I wanted to see basically market again displacing higher with bullish for early gap and there I'll be looking for entry, okay. And that is going to be our breaker unicorn model or maybe silver bullet model. So let's see. So still no bullish for early gap. So here we created a very small fair value gap, okay. So in this area I placed my limit first of all, okay. So this was my limit, long position was here, stop loss was below this swing low, because I was expecting कि this is going to be our high resistance liquidity run, okay. Liquidity strip already हो चुका है, displacing with higher fair value gap, everything is already covered, okay. Even if you see जो ये H1 bearish वाली gap था, okay, this H1 bearish वाली gap
it becomes inverted fair value gap. Okay, this candle closed above this bearish level, right? So H1 order flow is shifting bullish basically, right? You can see this can be your entry, but market ये लेवल टैप ही नहीं किया था बेसिकली. ओके, इट कंटिन्यू एक्सपेंडिंग हायर एंड हायर बेसिकली. ओके, यू कैन सी. सो अगर यहाँ पे जो लोग एंट्री लिए होगा डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. बट आई मिस दिस एंट्री. यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं मेरे को H1 फेयर वाले गैप में. ठीक है, सो आई सॉ दिस एंट्री बेसिकली. ओके, so we have this market structure shift as well. Okay, we trading higher, and what you can see here, what entry model is here basically impulse one, this one, and this was impulse two, right? ये सभी already discuss किया हुआ है Udemy में basically. Okay, impulse one, impulse two. So impulse two में अपना fair value gap form हुआ है, right? You can see fair value gap here. So this was my entry at this H1 fair value gap. Okay, it was overlapping with this swing high as well. Okay, now this day we have this FOMC news also coming. Okay, so I placed my long here somewhere. Stop loss was below this first candle low. Okay, and I was targeting around somewhere 1 is to कुछ यहाँ पे कुछ target था. Okay, I'll show you. Okay, so this was my entry here. मेरा entry tag हुआ. So see here again we created this H1 bullish fair value gap. Okay, we have created another H1 bullish fair value gap. So here you can add more position. पर्सनली मैंने यहाँ पे पोजीशन ऐड नहीं किया था. द रीज़न क्योंकि उस दिन एफओएमसी का न्यूज़ था, एंड एफओएमसी में मार्केट फेड रेट जो आता है काफ़ी बड़ा कैंडल खुलता है अगर आप लोग देखोगे तो. ठीक है, इफ़ यू अगर रॉन्ग हुए तो डेफिनेटली इट बेसिकली काफ़ी बड़ा एक स्लिपेज होता है. सो दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड. आई वाज हैप्पी विद दिस एंट्री. ओके, आई डिडंट ऐड एनी पोजीशन. ओके, अब अगर आप DXY देखोगे, ठीक है, ये मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो इट वाज अ वेरी डीप रिट्रेसमेंट. मैंने एग्जिट नहीं किया था अपना पोजीशन बिकॉज आई स्टिल अंडरस्टैंड कि दिस इज आवर हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक. ओके, एंड इन नेक्स्ट 1 hour 2 hour we had the news basically. Okay, and you can see how it expanded basically in just one candle. Okay, it's a very big candle. Okay, I'll show you the execution as well, but let's go and check DXY as well. So as we was discussing about DXY, you can see we was rejecting from this 4 hour fair gap. We created kind of buy side liquidity and we had this weekly external, right? And you can see during FMC जो भी हम discuss कर रहे थे, you can see how it expanded higher that time. Okay, and it grabbed this weekly external. And let's come to USDJPY. So this was the trade, very good trade. Of course, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता था पोजीशन अगर FMC नहीं होता, तो of course I have added position here. मेरा स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे जाता है, राइट? अगर मैं लेट्स से यहाँ पे इस H1 फेवर गैप में ऐड करता पोजीशन तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, एंड टारगेट जो भी अपना 1:2 1:3 वट एवर आई लाइक टू टारगेट. ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो जब मार्केट न्यूज़ आने से पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा था. वाई? क्योंकि मेरे को पता है नेक्स्ट कैंडल न्यूज़ है, अगर मेरे अगेंस्ट गया तो जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है वो समवेयर यहाँ पे क्लोज होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ स्लिपेज. इसलिए मैं थोड़ा रूम दिया हुआ था स्टॉप लॉस को कि अगर मैं रॉन्ग भी हूँ तो मतलब स्लिपेज के कारण बहुत बड़ा मतलब लॉस नहीं हो. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट ट्रेड माय स्टॉप लॉस. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल. ऐसा नहीं कि ट्रेड मिल रहा है बस लेते जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन एज वेल. So here you can see my position basically, and here you can see my execution as well. Okay, so I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. um, make sure to join the Discord. I'll share there my analysis. Okay, and if you guys want to check out my Udemy course, it's at very affordable price for everyone. Okay, more than 25 hours of video is available. Everything I have discussed here, so just go and check out basically. Okay, you will see I have a basic breaker block, order block, stop block, everything is here. Okay, so the thing we right now discussing about impulse one, impulse two play. So here it is. Okay, so everything is here. You can go and check out. You can watch this video. Okay, more than 1100 students already are in
this course. So yeah, thank you for watching this video, guys, and happy new year. See you next year basically. Take care.